Hey guys, welcome back to Simply JVR. मेरा नाम विशाल, मेरे साथ मेरे दोस्त जेरी। हाय। जेरी भाई, आज का टॉपिक है आईएमएफ ने वार्न किया मालदीव को हम्म। कि भैया अपना जो भी डेब्ट का रेशियो है या फिर मतलब अनसस्टेनेबल है उसको ठीक करो। उधार अभी चुकाओ। देखते हैं आईएमएफ ने अभी आईएमएफ ने क्या फटकार लगाई है। कहीं ये पाकिस्तान जैसे ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में तो नहीं चला जाएगा? लग रहा है जिनके हरकतों से इनके नहीं बोलूंगा मैं, मुइज़ू की हरकतों से लग रहा है। भाई साहब ने यस, मुझे क्या डेवलपमेंट भी रोक दिए, पता नहीं क्या क्या रोक डेवलपमेंट रहे रोक हैं। दी यार, पैसा नहीं है वो तो पैसा चाहता नहीं है कि है। भाई इकोनॉमी स्टॉप पे आ जाए, ऐसा हो जाए। अब तक इंडिया के ऊपर बोल रहे थे कि तुम लक्षद्वीप को कैसे डेवलप करोगे तुम करोगे कैसे, हमसे ज्यादा थोड़ी ना कर पाओगे। अब बोल रहे भैया हम ही नहीं कर पा रहे ओ। मतलब महीने भर में इनका सब कुछ खराब हो गया, एक महीने भर में खराब हो गया। चलो देखते हैं क्या हुआ इसमें, लेट्स सी। ऑलराइट, हियर वी गो। There's trouble for the Maldives. The International Monetary Fund has warned its government. And what is the warning? Be careful of your debt. It's a timely warning for President Muizzu. He's been revamping Maldivian foreign policy. India out, China in. That is his mantra. That's Muizzu's new policy. India out, China in. And China, as we know, is the biggest loan shark in town. So how will this equation work out? We'll get to that in a bit, but first, let's look at the IMF warning. Here's what the International Monetary Fund has said, and I'm quoting. Without significant policy changes, the overall fiscal deficits and public debt are projected to stay elevated, and the Maldives remains at high risk of external and overall debt distress. देख रहे हो? हाई रिस्क भाई, मतलब अब इनके लोगों पे भी वैसा ही हो गया जैसे पाकिस्तान में। अभी हर पाकिस्तान के जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर 3 लाख का लोन, मतलब 3 लाख का कर्जा होता है। ओ वो भाई। पैदा होने के बाद उसके ऊपर 3 लाख का कर्जा है। और कितने ठीक बंदे है, हैं वहां पे? कितने पॉपुलेशन क्या है? 25 करोड़। और यहाँ पे? यहाँ पे मेरे को पॉपुलेशन नहीं पता यार, बट यहाँ पे अभी अभी वो सिचुएशन नहीं हुई है। हाँ। बट दे आर नाउ जस्ट एंटरिंग दैट सिचुएशन कि हाँ हम अब स्टेप ले रहे हैं कि हम भी ऐसे ही पाकिस्तान को फॉलो करेंगे। फॉलो पाकिस्तान तो चलो देखते हैं। Let me underline those words. High risk of debt distress. You know what that means? It means your loans and liabilities are way too much. You could soon be unable to make payments. In other words, a default is a possibility. The Maldives is at high risk of that situation. And how much debt are we talking about? In 2021, their external debt was around $3 billion. The Maldivian GDP is all of $5.4 billion. External debt is $3 billion. So the foreign debt is 55% of the national GDP. Total debt is even higher, almost 110% of the GDP. And where does China figure in this? Beijing is the biggest lender to the Maldives. They owe 42% of their foreign debt to China, which is around $1.2 billion. And that's a lot of money for the Maldives. Higher debt also means higher servicing costs. And that's a lot of money. Bro, इस बंदे से क्वेश्चन है, ब्रूडर व्हाट यू डूइंग ब्रूडर? खुद भी डूबोगे, कंट्री को भी डुबाओगे क्या? छोड़ेंगे नहीं, कंट्री को डुबा के मारेंगे। किससे दोस्ती कर रहे हो? बहुत बुरा कर रहा है भाई ये, लेट्स सी। Okay. For the Maldives. Higher debt also means higher servicing costs. This year, Mali will have to spend $300 million on debt servicing. Basically, interest and repayment, $300 million. By 2026, that number could reach $1.07 billion. In other words, distress. This data raises two important questions. Number one, how did Mali rack up this debt? And number two, what is Muizzu's plan to pay it back? To be fair, these loans चाइना को बोलेगा भाई 300 रुपए निकाल ला भाई, कर्जा चुका ले भाई।
चाइना से तो वो कुछ नहीं मिल रहा उसको, जो मिलना था मिल गया। अब चाइना ने, चाइना व्हाट चाइना डिड, व्हाट? जिसका डर था वो चाइना ने कर दिया। क्या? चाइना ने इनका एक आइलैंड ले लिया 50 years के लीज पे। ओह शिट। नाउ दे विल क्रिएट अ बेस ओवर देयर। ओह नो। दैट व्हाट चाइना डिड। जी और जी। अब देखो इसमें क्या वेल प्लेड, होता वेल प्लेड। है। मिजुन, चाइना खेल गया। अभी लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं अभी इसमें क्या आता है। Date him. The Chinese debt was mostly taken during Abdulla Yameen's presidency. He was in power from 2013 to 2018. Yameen too was pro-China, so he took a lot of loans from Beijing. Then came the Wuhan virus pandemic. Malay's top source of income was shut down. That's tourism. It makes up 25% of their national GDP, also 32% of all jobs in the Maldives. But there was no tourism during the lockdown, so when tourism disappeared, so did income. At the same time, expenses kept increasing, more medical spending, more vaccine purchases, more money for doctors and nurses. All of this required additional loans, which is why Maldivian debt is so high today. Now we come to the second question. What is Muizzu's repayment plan? To cozy up to China, believe it or not. Last month he traveled to Beijing. He held talks with President Xi Jinping. Some 20 deals were signed by the two leaders. They cover a lot of different sectors like infrastructure, tourism, climate resilience, and a whole lot of others. But that's all we know. We don't know how much money is coming in, when it's coming in, or whether it's loans or grants. In what form is this money coming? The deals are shrouded in secrecy. I hope he has things planned to cover up those debts. चाइना कभी ग्रांट नहीं देता। चाइना ऑलवेज गिव लोन। वहीं इंडिया ग्रांट देता है। यूएसए ग्रांट देता है, इंडिया ग्रांट देता है। इंडिया बस दे देता है कि ठीक है रख लो, हमें नहीं चाहिए, मतलब मत करना पे वापस, एज अ गिफ्ट दे देता है। इंडिया अगर ग्रांट में दे रहा है, मतलब अगर लोन दे रहा है, तो वो देता है सॉफ्ट लोन, कि भैया तुम हमसे पैसे ले लो और ना तुम अब इसका जो भी तुम इससे खरीदोगे हमसे ही खरीद लो। अच्छा। ठीक है, वो सॉफ्ट लोन होता है, हमसे पैसे लेके हमसे ही खरीद लो, हम तुम्हें उसमें से डिस्काउंट में दे देंगे। ओके, सो टेक्निकली हमारा सामान बेचने के लिए हमने ही खुद उनको पैसे दे दे, तुम हमसे ये सामान ले जाओ, ये रहे पैसे। वाह। वो इंडिया। बट चाइना ऐसा नहीं करता। चाइना लोन देता है और चाइना उस पर रखता है इंटरेस्ट, और अच्छा खासा इंटरेस्ट रखता है, बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट रखता है। पाकिस्तान अभी क्यों क्यों डूबा पड़ा है? इंटरेस्ट ही दे रहा है, बस इंटरेस्ट ही दिया जा रहा है। जो रियल अमाउंट है वो तो दे ही नहीं पाता। तो वही अब इनके साथ होने वाला है, बहुत बुरा हाल होने वाला है। इन्होंने गलत किया। अगर ये इंडिया को साथ में लेके चलते हैं ना, ठीक है चाइना से लोन ले, तो ये इंडिया का हेल्प ले सकते थे, लेकिन अभी इंडिया हेल्प नहीं करेगा इनकी। अभी खैर इंडिया ने बजट निकाला है जिसमें इन्होंने साइड में रखा है। देखो इंडिया ने इनके लिए अलग से बजट निकाला। सोचो, इंडिया अपने लिए तो निकाल रहा है, मुइज़्ज़ू मतलब मालदीव के लिए बजट निकाल रहा है कि भैया ये अमाउंट हम मालदीव को देंगे। कोई नहीं सोचता भाई ऐसे। लेट्स सी आगे क्या है। But after the trip to Beijing, Muizzu did make an announcement. He said a Chinese technical team would visit the Maldives. What for? To consider restructuring loans. We haven't heard any update on that. But we've seen how the Chinese negotiate. They play hardball. In Sri Lanka, people did not have fuel to run ambulances. The country had virtually collapsed. But even then, China played hardball. President Muizzu should be mindful of all of that. China's debt and help always comes with strings attached. We're already seeing evidence of that. A Chinese spy ship reached the Maldives today. Malay says it's a routine voyage. No research or studying, just replenishments. But China hinted it could be more. Over the years, China and Maldives have maintained close cooperation in the field of marine scientific research. China appreciates Maldives' decision according to relevant regulations in international law and based on sovereignty and China-Maldives friendship to provide convenience and assistance for Chinese research vessels to enter its port.
So the ball is now in Muizzu's court. He knows the numbers. I'm sure he's heard the IMF warning. Does he still want to get closer to China, or does he want to keep his options open? At the end of the day, it is his call. He is the president. But at stake is the livelihood of 500,000 Maldivians. 500,000. What do you think, bro? Again, it's his call, but now अब वो उसकी मजबूरी है. मतलब एक तो he likes चाइना. नाउ ये धीरे धीरे उसकी मजबूरी बन जाएगी कि उसको चाइना की तरफ ही जाना पड़ेगा. बट उनको ओपन इकोनॉमी रखनी चाहिए कि वर्ल्ड वहां पे आके मतलब इन्वेस्ट करे. ओनली नॉट ओनली चाइना इन्वेस्ट करे, वर्ल्ड आके इन्वेस्ट करे. जब दुनिया के इन्वेस्ट करेगी ना तो इनकी इकोनॉमी अच्छे से ग्रोथ करेगी. खाली चाइना करेगा तो फिर इकोनॉमी डाउन चली जाएगी. सीखना चाहिए था इनको, मुइज़्ज़ू को ना, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, इन सबसे थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए था. जब जब चाइना ने हाथ रखा उनकी इकोनॉमी डाउन गई. जब जब हाथ हटाया है तो फिर थोड़ा थोड़ा बैलेंस हुआ है. अभी श्रीलंका से हाथ हट गया धीरे धीरे, इंडिया आई है तो उनका इकोनॉमी बैलेंस हो गई है. तो सीखना चाहिए. बट दे आर नॉट टीचिंग, मतलब दे आर नॉट लर्निंग. वो अपने अभी पावर में है कि हम सरकार हैं, हम सरकार हैं. वही 2 महीने अभी सीट में आए हैं तो दे आर गेटिंग यूज्ड टू इट एंड हैविंग फन विद इट. ऐसे जगलिंग जैसे कर रहे हैं लगता है. जगलिंग, पूरे देश को जगलिंग कर रहे हैं वो. देश को जगलिंग कर रहे हैं. लेट्स सी अभी क्या होता है. गाइस, आपका क्या कहना है? क्या मालदीव को ओपन करना चाहिए अपने इकोनॉमी को टू वर्ल्ड, या फिर चाइना के साथ स्टिक रहे, या फिर इसको वापस इंडिया के साथ स्टिक होना चाहिए? प्लीज अपने व्यूज शेयर करें. बट देन द क्वेश्चन इज, इंडिया वापस स्टिक करेगा? यस, इंडिया मालदीव को नहीं छोड़ सकता. अच्छा, वापस ले लेगा जियोपॉलिटिकली कम बैक? यस, वापस ले लेगा क्योंकि जियोपॉलिटिकली इंडिया को मालदीव चाहिए. That's why, guys, you need to have a friend like my friend Vishal, Mr. Know It All. He knows a lot of things, and he's actually teaching me a lot of things that we all should be, youngsters should know about our country, and he's helping me out. Yes. All right. Thank you. That's it for this Thank you, video, buddy. guys. मिलते हैं next video में. Bye. Bye.